गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। दिस इज सिविल सर्विसेज एकेडमी देवघर झारखंड। माई सेल्फ एस के तिवारी, IAS रिटायर्ड। डियर एस्पिरेंट्स, here comes question number 1 of the day. Syria borders with Syria borders with number 1 Iran, number 2 Iraq, number 3 Turkey, number 4 Saudi Arabia. Select the correct code. A 123, B 23, C 13, and D 13 and 4 only. So dear aspirants, अब आपको बताना है कि सीरिया का बॉर्डरिंग कंट्री क्या है। इफ यू आर नोइंग, आप इसका आंसर देंगे। सो आइए चलें। यस, समिंदर सिंह जी आ गए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो द आंसर इज रिपीट सर। अच्छा अच्छा अच्छा, रिपीटिशन आपको करना है। सीरिया बॉर्डर्स विथ नंबर 1 ईरान, नंबर 2 इराक, नंबर 3 टर्की, नंबर 4 Saudi Arabia. Now you have to select the correct code. A 123, B 23, C 13, and D 134. So what should be the answer? So such type of questions you will find, okay, in the prelims examination. Dear aspirants, prelims examination. Iraq, Turkey, Iraq and Turkey, and this is the correct answer. So this is thumbs up. B is the answer, 2 and 3 only. B is the answer, 2 and 3 only. वेरी गुड, वेल डन मिस्टर समिंदर सिंह जी, बहुत अच्छी तैयारी है। विथ रेस्पेक्ट टू बसाल्ट्स, consider the following statements. Number 1, basalt formations are concentrated in the western part of the country and Raj Mahal trap in the eastern part of India. Number 2, basaltic rock constitutes divalent captions of Ca, Mg and Fe, that is iron. Number 3, CO2 can be stored in basalts. Which of the above statements are correct? A 12, B 23, C 13, and D 12 and 3. So basalt rock. Now storage capacity assessment. Saminder Singh is answering A 12. Parsuram Kumar ji, very good evening. But all the statements are correct, Mr. Saminder Singh ji. The third statement, which you have eliminated, that is also correct because CO2 can be stored in basalts. So this question is based on a news item published in the Hindu newspaper, basalt rock CO2 storage capacity assessment. So this question is based on this. So our answer is D. All the statements are correct. With respect to cactus plantation, consider the following statements. Number 1, its largest concentration is found around latitude of 30 degrees north and 30 degrees south of the equator. Second, absence of chlorophyll on part or over the entire surface of a cactus plant causes variations. Third, cactus nopals are rich in pectin, minerals, vitamins, and amino acids. Which of the above statement are correct? A 12, B 23, C 13, and D 1, 2, and 3. So this question relates to cactus plantation. Dear aspirants, let us see what's your response. और इसके बाद हमारा आंसर आएगा. So now if you are not answering, the answer is D 1, 2, 3. All the statements in this MCQ are correct. Dear aspirants, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल
करेक्ट है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग REDD प्लस, ओके, so what does it mean? Reducing emissions from deforestation and forest degradation, REDD plus. So we have two statements. Number one, REDD plus is a climate change mitigation solution developed by parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC. Second, REDD plus incentivize developing countries to reduce emission from deforestation and forest degradation. The third statement, REDD plus is also recognized under Paris Agreement. How many of the above statements are correct? Dear aspirants, you should make a chart related to Paris Agreement, then Earth Summit, then Montreal Protocol, Quetta. Okay, all these are very, very important as far as environment related questions are concerned. B is the answer given by Mr. Parsuramji. A only one, B only two, C all three, and D none. So, dear aspirants, our answer is all three. All the three statements are correct. REDD plus. Dear aspirants, REDD plus is a climate change mitigation solution developed by parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Second, REDD plus incentivize developing countries to reduce emission from deforestation and forest degradation. The third statement, REDD plus is also recognized under Paris Agreement. So, dear aspirants, all the three statements are correct. So, I hope everything is clear to you, dear aspirants. और काफी अच्छे से आप अपनी तैयारी को ले जा रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि आपके प्रश्न के उत्तर देने का जो प्रतिशत है वो काफी अच्छा है। इन रेफरेंस टू द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, as per the constitution, article 361 provides immunity to governors, lieutenant governor of UT and president. क्या immunity है? Number two, both criminal and civil proceedings cannot be initiated or continued against them while in office. Dear aspirants, so select the correct code. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. अब ये क्वेश्चन का जवाब आपने देना है। बताइए, इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 361 और परशुराम जी ने ए बताया है आंसर, बट द आंसर इज डी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बाबू जरा ध्यान से सुनिए। देयर इज नो मेंशन ऑफ एलजी इन इट। एलजी मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 361, it offers immunity only to governors and the president, not LG. Okay, not LG. So article 361 grants immunity to the president and governors while they are in office. जब वो अपने पद पर हैं, they have protection from both criminal and civil proceedings. उनके खिलाफ न तो दीवानी मुकदमा न तो फौजदारी मुकदमा चल सकता है। इज इट क्लियर मिस्टर परशुराम जी, मिस्टर समिंदर सिंह जी? क्या ये आपको
ये बात समझ में आ गई? ओके, सो ये इम्यूनिटी यूनियन टेरिटोरी के एलजी को नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को नहीं है। आज का क्लास हम 8 बजे ही बंद करेंगे बिकॉज आई हैव एन इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, सो क्षमा कीजिएगा डियर एस्पिरेंट्स। और इसीलिए मैंने क्वेश्चंस चुन चुन करके लाया है कि ऐसे ऐसे। ओके, अब इसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30, the minorities stated under Article 30 of the Indian Constitution includes। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है आर्टिकल 30 में? ए, रिलीजन माइनॉरिटीज ओनली, धार्मिक अल्पसंख्यक। बी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली, भाषाई अल्पसंख्यक। सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और डी, एथनिक माइनॉरिटीज। अब बताइए, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 इज फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ये क्लियर है। तो उसमें क्या है? 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 इज फंडामेंटल राइट्स डियर एस्पिरेंट्स। अब बताइए उसमें अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटीज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी दोनों का दोनों माइनॉरिटीज को हम बोलते हैं, रिलीजन और लैंग्वेज, भाषाई हो या फिर। ओके, सो डियर एस्पिरेंट्स, आइए चले एक और प्रश्न की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वी हैव 4 स्टेटमेंट्स। नंबर 1, वीमेन वोटिंग राइट्स एक्ट 1962, 1962 का महिला मत अधिकार, मताधिकार, ओके, अधिनियम 1962 gave right to vote to all the women in general election in India from 1962। क्या ये सही बात है? Second, the percentage of women MPs in the current Lok Sabha is more than 10%. Third, the 73rd and 74th CAA, that is Constitutional Amendment Act, provides for the 1/3। और चौथा, 106 amendment provides for the 1/3 reservation for women on Lok Sabha and Rajya Sabha। How many of the above statements are correct? जो गिर गया। Select the correct code, A only 1, B only 2, C all 3, and D none। So dear aspirants, what is your response? Please write. Now, India as a sovereign republic provided the right to vote for all its women right from the first general election, that is 1952। So फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट में तो पहला समाप्त हो गया, क्योंकि वो 1962 से कह रहा है, लेकिन इनको महिला को मताधिकार मिला फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 से ही। While the right to vote was provided to all women since the commencement of Constitution, the representation of women in Lok Sabha and state legislative assembly has been far from satisfactory। The percentage of women MPs in Lok Sabha had been very low, between 5% and 10% till 2004। It rose marginally to 12% in 2014 and currently stands 14% in the 18th Lok Sabha। The representation in a state legislative assembly is even poorer, with the national average 9%। Okay, 73rd and 74th amendments of the Constitution in 1992 and 1993 provided for 1/3 reservation of the women in panchayat municipality। However, attempts between 1996 and 2008 to provide similar reservation in Lok Sabha and assemblies were unsuccessful। So dear students, you should also remember
No Rajya Sabha is there. One third of all seats for women in Lok Sabha, State Assembly, and Legislative Assembly, National Capital Territory, Delhi. So, dear aspirants, our answer is only two statements are correct. हमारे केवल दो स्टेटमेंट इसमें सही है. आइए देखें which of the following statements are correct. This is ABCD type of question. A. Our constitution only recognizes the concept of cooperative federalism. एक एक जो ज्वलंत मुद्दे हमारे देश में उठे हैं, महिला आरक्षण, उस पर भी सवाल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारिता संघवाद, हर पर एक एक प्रश्न. ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिकॉग्नाइजेज द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इज इट करेक्ट? B. Our constitution recognizes the concept of uncooperative federalism along with cooperative federalism. C. Our constitution does not recognize uncooperative federalism. Or D. Our constitution only recognizes the concept of uncooperative federalism. This is typical question. What is the fact? The fact is B. B is the correct answer. In Union of India and ANR versus MS Mohit Minerals, the Supreme Court discussed the concept of uncooperative federalism along with cooperative federalism and observed that a degree of contestation between the center and states is also good for democracy. Indian federalism is a dialogue between cooperative and uncooperative federalism, observed the court. The decision was in the context of GST Council recommendations. So, dear aspirants, now let us move to the another question, and this is based on the preamble of our constitution. संविधान की प्रस्तावना में क्या है? आइए देखें. The term unity and integrity of India can be seen, dear aspirants, in which part of Indian constitution? A. Directive principle of state policy, preamble and fundamental duties. B. Preamble. C. Preamble and fundamental duties. And D. Fundamental rights and and DPSP and preamble. So, dear aspirants, what should be the answer? अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. The term unity and integrity of India can be seen in which part of Indian constitution? So, if you have got the clue, you should write the answer. आपको उत्तर बताना चाहिए कि unity and integrity can be seen in which part of Indian constitution. So, dear aspirants, it is in preamble as well as in fundamental duties. So, our answer should be C. Okay. Rishi Singh. Yes, welcome, Mr. Rishi. And very good evening to Mr. Kailash Prasad ji. Namaste. Very good, namaste. So, जहां तक यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता का भारत के संविधान में उद्धरण, समावेशन, ओके, अंकन का प्रश्न है, ये प्रियम्बल प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A दोनों जगह मेंशन है. डियर एस्पिरेंट्स, सी इज आवर आंसर. आइए देखें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, द G20 is an international group initially founded in 1919 after the Asian financial crisis. Second, G7 was formed after G20. Or third, all members of G7 are part of G20. Which of the above statements are correct? Select the correct code A12, B23, C13 and D123.
3. So, dear aspirants, what should be your answer? The G20 is an international group, accepted, initially founded in 1990. D बता रहे हैं, C is the answer. 1 and 3. Second statement is not correct. After the Asian financial crisis, so this is correct. As a forum for finance ministers and central bank governors of 19 countries and European Union. So 20. G7 was formed in 1975. Second statement is correct. So, dear aspirants, G7 members: United States, United Kingdom, Germany, Canada, Japan, France, and Italy. So, G20 members: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States, and European Union. So, dear aspirants, आपने देखा किस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्नों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं और किस तरह से आप अपनी तैयारी को अगले अंजाम तक पहुंचाते हैं. So, let us have another important question. और यहां पर आप देखेंगे कि एक और धमाकेदार क्वेश्चन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है. डियर एस्पिरेंट्स, आइए चले. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हांटा वायरस, HANTA-VIRUS. जब भी आप यूपीएससी के PYQs पढ़ेंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक ना एक वायरस से संबंधित सवाल दिखाई पड़ेगा, चाहे वो जीका हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई वायरस हो. वायरस उसमें रहना ही रहना है. सो हांटा वायरस, नंबर 1, हांटा वायरसेज आर ए ग्रुप ऑफ वायरसेज कैरिड बाय rodents, RODENTS. Second, for the vast majority of hantaviruses, human to human transmission is 0. Third, most of the symptoms caused by hantavirus is same as coronavirus. Which of the above statements is are correct? A12, B23, C13 and D13. अब यहां पे आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. डियर एस्पिरेंट्स, सो ट्राई टू ओके अपना उत्तर आप बताएं डियर एस्पिरेंट्स. और समिंदर सिंह जी ने ए संभवतः आंसर बताया है, बट द आंसर इज डी, 1 and 3. ओके, 1 and 3, डी इज द आंसर. So, hantavirus outbreak on Atlantic cruise ship. This was the news item published in the Hindu National Daily. और वहीं से ये क्वेश्चन बन गया. So, dear aspirants, our answer should be 1 and 3. For the vast majority of hantavirus, human to human transmission is 0. This is not correct. This is not correct. Hantavirus are group of viruses carried by rodents. This is correct. And most of the symptoms caused by hantaviruses is same as coronavirus. This statement is also correct. Now, let us have this question from economy segment. Economy segment. Dear aspirants, consider the following statements regarding Asian Development Bank, that is ADB. Statement 1. The Asian Development Bank provides knowledge, support, and technical expertise to its member countries to address challenges such as gender equality and climate change. Statement 2. In pursuing its development objectives, the ADB operates independently of national governments and other multilateral institutions. Dear aspirants, during the 1960s, ADB focused much of its assistance on food production and rural development. Which of the statements given above are correct? Third statement and first statement are correct. Second statement is not correct.
सो आवर आंसर शुड बी 1 and 3, 1 and 3। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे संबंधित एक सवाल आपके समक्ष। आइए देखें। अब पिछले साल भी आपने देखा आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इस पर सवाल था। तो मैंने सोचा कि यहां भी एक क्वेश्चन आपको एडीबी से संबंधित लाया जाए। अब एक क्वेश्चन धमाकेदार, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, डीईडब्ल्यू, नोट कर लेना है। डीईडब्ल्यू, व्हाट डज इट मीन? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डियर एस्पिरेंट्स, हम तो सब कुछ दे रहे हैं, किसके लिए? आपकी सफलता के लिए। कब तक? जब तक कि आप लबासना के दरवाजे में प्रवेश नहीं पाते हैं, तब तक यह साथ नहीं छूटेगा। आपको वहां जाना ही है, निश्चित रूप से जाना है। डियर एस्पिरेंट्स, एक बात जरूर आप गांठ बांध के रख लीजिए, यही एक परीक्षा है जो आपसे 2 साल मांगती है, 2 years। अगर आपने सच्ची तैयारी कर ली 2 साल, क्लोज्ड डोर प्रिपरेशन, ऐसा नहीं कि तैयारी भी कर रहे हैं, मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, मुंडन कराने जा रहे हैं, और भी कहीं जा रहे हैं, नो, ओके, ये नहीं है। यू हैव टू किक ऑफ एवरी डे। हर दिन एक नया दिन बनाना है और किक ऑफ जैसे फुटबॉल में होता है करना है। गोल पोस्ट तक जाना है एवरी डे। यही इस परीक्षा का सार तत्व है। मतलब प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, तीनों की तैयारी इंटीग्रेटेड, एक साथ तैयारी, यही परीक्षा मांगती है। इस परीक्षा का मूल तत्व है, यू शुड नेवर फॉरगेट डियर एस्पिरेंट्स, यही एक परीक्षा है जो आपसे सतत, कॉन्टिन्यूअस, क्या कॉन्सिस्टेंट प्रिपरेशन मांगती है। पॉजिटिव माइंड, ओके, बिल्कुल पॉजिटिव। कहीं से भी कोई ऐसा क्षण नहीं जो आपको डिट्रैक्ट करे, उदासी तो बिल्कुल नहीं। डियर एस्पिरेंट्स, directed energy weapons are especially suitable for countering which of the following threats? Number 1, swarm drones. Number 2, incoming rockets and artillery shells. Number 3, stealth submarines. This is the term. Select the correct answer. A 1 only, B 1 2, C 2 3, and D 1 2 3. Dear aspirants, the answer is B, 1 and 2 only. Swarm drones and incoming rockets and artillery cells. DEW, directed energy weapons. Yes, Mr. Alam, this is thumbs up to acknowledge your correct answer. So, dear aspirants, now let us move to the next question. और ये हमारा डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसरो, डीआरडीओ, ये तो टारगेट करता है यूपीएससी निश्चित रूप से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ईटीएफ, इसको भी नोट कर लेना है, इनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। स्टेटमेंट 1, the enhanced transparency framework under the Paris, this is a statement based question. Paris Agreement aims to enhance clarity and comparability of climate related information submitted by parties. Statement 2, under this framework, parties are required to submit information on greenhouse gas inventories and progress towards nationally determined contributions through biennial transparency reports. Statement 3, the ETF, Enhanced Transparency Framework, operates on a one-size-fits-all principle, quote unquote, one size fits all. ये कौन सा साइज है? फ्री साइज। सो
strictly prohibiting any flexibility or exemptions for developing nations to ensure global data consistency. So, which one of the following is correct in respect of the above statements? Dear aspirants, 2 and 3 statements are correct. First statement is not correct. आइए चले एक और देखें, आकाश एनजी, ये क्या है? आकाश एनजी, AKASH, आकाश हाइफन एनजी, मिसाइल सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम है विथ रेफरेंस टू आकाश न्यू जेनरेशन। एनजी का मतलब न्यू जेनरेशन, 5G नहीं, एनजी, न्यू जेनरेशन मिसाइल सिस्टम। Consider the following statements. Number 1, it is a surface to air missile system with a strike range of approximately 70-80 kilometers. Second, it is propelled by an integrated ramjet engine similar to the original Akash missile. Select the correct answer. Okay, A1 only, B2 only, C both 1 and 2. Dear aspirants, our answer is A. First statement is correct. So you may quote the newspaper. Okay, Akash new generation is a surface to air missile SAM system with an enhanced engagement range of around 70 to 80 kilometers, significantly higher than the earlier Akash variants. Akash NG does not use an integrated ramjet engine, unlike the original Akash, okay, which used a ramjet. Now, Akash NG employs a dual pulse solid rocket motor. So, और यूपीएससी का काम है कंफ्यूज करना। सो आकाश और आकाश एनजी, आकाश में रामजेट इंजन, आकाश एनजी न्यू जनरेशन में नो रामजेट। सो ट्राई टू कैच माय वर्ड्स डियर एस्पिरेंट्स। आइए देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय इन इंडिया। नंबर 1, the establishment of Gram Nyayalaya aims to reduce the burden of Supreme Court and High Court cases and do speedy justice. Twarit Nyay. Second, Gram Nyayalaya was set up under Legal Services Authority Act in 1987. Now you have to examine whether it is correct or not. Third, as per the law, a state government established more Gram Nyayalaya for panchayats at intermediate level. How many of the above statements are correct? A1 only, B1 2, C3 only, and D2 3. Dear aspirants, now Gram Nyayalaya Act 2008. So first and second statements are not correct. Our answer is C3 only. Yes, yes, Mr. Alam, correct. आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। Consider the following statements. Number 1, raid notices are published by Interpol at the request of a member country and must comply with Interpol's constitution and rules. आइए चले, आजकल बहुत पढ़ता हूं गुरुजी, पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो यूपीएससी है, ये तो आपको स्किल्ड करता है, इसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत है। और किसकी जरूरत है? बिल्कुल स्मार्ट। दिस इज द ओनली जॉब। आप देखते हैं कितना क्रेज है, पूरे भारत के घर घर में आईएएस आईपीएस की गूंज है, नहीं है क्या? कितना अच्छा लगता है। तो फिर मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा। एक सिंपल पेड़ पे लटकते हैंगिंग फ्रूट को तोड़ना है तो क्या हाथ नहीं बढ़ाएंगे? उसके पास नहीं जाएंगे? उसकी संवेदना को महसूस नहीं करेंगे? अब ये आप पे निर्भर है कि हाथ से लपक लें, कि लाठी से मार के तोड़ें, कि ढेले से मार के तोड़ें, या कैसे खा लें, या फिर टपकने का इंतजार करें। नो, टपकने का इंतजार नहीं करें, प्रयास करें।
इट नीड्स कंसिस्टेंट लेबर डियर एस्पिरेंट्स। यही तो एक परीक्षा है, यही तो एक परीक्षा है जिसमें कि आपके परिश्रम की जरूरत है। आइए देखें नाउ द आंसर टू दिस कंट्री, दिस एमसीक्यू। सर ये क्या है मिस्टर जिम्बो, क्या नाम है सर? एसबीआई पीओ प्री वर्सेज यूपीएससी प्री, व्हिच एग्जामिनेशन इज टॉप? आपने तो वही कह दिया, सूर्य बड़ा कि चंद्रमा बड़ा। टॉप कौन है? सूर्य अपने आप में सूर्य है, चंद्रमा अपने आप में सूर्य है, लेकिन सूर्य तो सूर्य है, स्टार स्टार, कोई कंपैरिजन नहीं। यूपीएससी नो कंपैरिजन। ओके, यूपीएससी के सामने एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर या जो भी सैटेलाइट है डियर एस्पिरेंट्स, बिल्कुल सैटेलाइट है। आइए देखें, रेड नोटिसेज आर पब्लिश्ड बाय इंटरपोल एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए मेंबर कंट्री एंड मस्ट कंप्लाई विथ इंटरपोल्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। यहां पे जीएस है, जनरल स्टडीज। बैंकिंग एग्जामिनेशन में जीए है, जनरल अवेयरनेस। हो तो गया अंतर। यहां जीएस 4 है, वहां जीए है ओनली 25 क्वेश्चंस। Dear aspirants, second, the issuance of red notice mandates the arrest of individual in all member countries of Interpol. और तीसरा, a country can request an Interpol red notice for a person of a different nationality. Dear aspirants, only first and third statements are correct. Our answer is D. हमारा उत्तर इसमें डी होगा। और आज का धमाकेदार क्वेश्चन, वेनेजुएला शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ। वेनेजुएला का जमीनी सीमा किससे मिलता है? किससे मिलता है? नंबर 1 कोलंबिया, नंबर 2 ब्राजील, नंबर 3 गुयाना। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, A only 1, B only 2, C all 3 and D none। अब आपको बताना है आंसर क्या है। डियर एस्पिरेंट्स, वेनेजुएला से तीनों का बाउंड्री मिलता है। ओके, कोलंबिया का भी, ब्राजील का भी, गुयाना का भी। आवर आंसर शुड बी सी ऑल 3। हमारा उत्तर क्या होगा? सी होगा। और यहां पे which of the following best describes the concept of curative petition? यह भी समाचारों में था, क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडियन जुडिशियरी। भारतीय न्याय में यह क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? ए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की सुरक्षा। बी, जस्टिस इज अबव ऑल। सी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड शुड प्रिवेल। एंड डी, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। व्हाट शुड बी द आंसर? SBI PO demand speed, think, ability, knowledge plus skill. Very limited time during the examination, but UPSC ample of time during the pre-examination. No, I don't think like this. Okay, it depends on your personal capability, quality to assess the things. It depends on your personal okay assessment. Dear aspirants, कोई भी परीक्षा पर इच्छा है। ध्यान से सुनिए, कोई भी परीक्षा पर इच्छा है, स्वेच्छा नहीं है। स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा। और आप जब असेसमेंट करने चलते हैं तो इस तरह की बातें लिखते हैं जो आप लिख रहे हैं। जब परीक्षा पर इच्छा है, हाउ कैन यू असेस? ये है, ये है। बस आपको सिलेबस देखना है, पीवाई क्यूज देखना है, जम के तैयारी करना है, कंपीट करना है। ये अच्छा है, ये बुरा है, अब तो वही हो गया। लेविस भी है, किलर जिन्स भी है, ओके, वान हुसैन भी है, पीटर इंग्लैंड भी है, देसी वाला भी रस्यम है, उत्थयम है, मिनिस्टर है, बहुत सारा है। क्या लू? कंपेयर करते रहो। डियर एस्पिरेंट्स, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। इफ यू हैव डिसाइडेड टू बी एन आईएएस, उसी रास्ते पे चल पड़िए। तुलना मत कीजिए, बैंक तो बैंक है, आईएएस तो आईएएस है, ये तो ये है। डेस्टिनी आपको वहां ले जाएगी।
यस, और सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आपकी ताकत में है कि आप किस तरह से अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं। Every day should be celebrated as a new day. Dear aspirants, what should be the answer? बताइए क्या होगा? क्यूरेटिव पेटिशन जो भारतीय न्याय व्यवस्था में है, उसका क्या है मतलब? क्या ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है? क्या ये जस्टिस इज अबव ऑल है? यही है। बी इज द आंसर डियर एस्पिरेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूरेटिव पिटीशन इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल टू ए पर्सन whose review petition has been dismissed by the Supreme Court. Though the Constitution explicitly speaks about the review power of the Supreme Court under Article 137. Never forget, please write, it is silent about curative petition. तो यूपीएससी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इट इज साइलेंट अबाउट क्यूरेटिव पावर. Dear aspirants, the curative petition was given shape and form in the case of Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra and others case. Dear aspirants, इस प्रकार से आज का ये आखिरी सवाल, उसके बाद टाटा बाय बाय. क्या है? नाबार्ड. Consider the following statements. The recommendation of B. Sivaraman committee report led to the formation of NABARD. Is it correct? नाबार्ड बना कैसा? कमिटी, कमीशन के रिकमेंडेशन तो होते ही हैं. नंबर 2, नाबार्ड एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. थर्ड, नाबार्ड प्रोवाइड्स ओनली शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एक्टिविटीज फॉर गिविंग अ बूस्ट टू प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर A12, B2, C1 and D1 to 3. Dear aspirants, okay, first and second statements are correct. Okay, the recommendation of B. Sivaraman committee report led to the formation of NABARD, and NABARD act was passed during the prime ministership of Indira Gandhi. Both are correct. Our answer should be A, 1 and 2. So thank you for joining me in such a great number. We have studied 20 questions today. आज तो 20 क्वेश्चन हमने आपको दिखाया और समय हो गया 45 मिनट्स. मुझे दीजिए इजाजत. कल तो फिर मुलाकात होनी है, 7:30 बजे होनी है. एवरी डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. दिस इज सिविल सर्विसेज एकेडमी, देवघर, झारखंड. और मैं हूं एसके तिवारी, IAS रिटायर्ड. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.